Good morning, students. Today we are going to begin with chapter 4, which is basic writing skills. Now, this chapter is very easy, children. All of you are learning this thing in English grammar since so many years. Ki what writing skills you need to learn. So, but as it is a part of your computer syllabus, let me introduce to you most of the things that is grammar part you are already studying, as well as you have also studied in your other classes. So written communication, all of you know, it is the most effective mode of communication. It is more formal and less flexible than oral communication. The written form is helpful in keeping a record of the conversation for future reference. Whenever you do any communication by writing or by sending text in the message on WhatsApp, what happens? You find it very good. Why? Because you feel that you have a record. Ki whatever messaging you have done or whatever conversation you have done, it will be kept as a record for your future reference. So the effectiveness of written content डिपेंड्स ऑन द करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स. अब जब भी आप किसी को मैसेज करते हो रिटन वे में, आपको सबसे पहले क्या देखना है? यू नीड टू चूज द करेक्ट वर्ड्स. देयर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ राइट सेंटेंस सीक्वेंस. जो वर्ड्स हमने चूज किए हैं उसको फॉर्म करते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस बनना चाहिए. एंड द कोहेसिवनेस इन द सेंटेंसेज. दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. नाउ लेट्स सी द 7 C's of communication. There are 7 elements of communication which are popularly known as the 7 C's of communication. Now, what are this? They are regarded as a checklist that helps to improve the professional communication skills and increase the chances that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. हम ये समझते हैं कि जो मैसेज हमने भेजा it is understood in the same way as we are going to send it. First C is what? Clear. The message should not be a vague or confusing. Anyone to whom you are messaging or anyone to whom you are communicating, your message should be very much clear. Correct. The message should be free of any grammatical and spelling mistakes. Also, the facts mentioned in the message must be relevant and accurate. Means whatever message you have given in the message or whatever content you have given, it should be relevant and accurate. Complete. The message should be complete. That is, it must include all the required information. The complete message answer most of the questions that receivers might have. Suppose whenever I am giving you any message on WhatsApp, I hope you people are understanding कि टीचर ने क्या हमें मैसेज दिया है. If I write my message incomplete, so you will be in a very confused mind कि what teacher has said you are not able to receive. So the message should be what? Complete, and it should see that the complete message is answering most of the questions that the receiver will have in their mind, and it will reduce the need of further correspondence. Once you give the clear and complete message, there is no need of further correspondence. Next is concrete. The content should be supported by facts and figures. Whatever message you are giving, it should be relevant and it should be supported by some facts and figures. जो भी आप बोलते हो या जो भी मैसेज आप बोलते हो, it should contain some facts. Concise. The message should be precise and to the point. Concise means what? Precise and up to the point बात बोलना. A short and brief message helps to retain the receiver's attention and saves the time. Consideration. The sender must take into consideration the receiver's opinion. जो sender है, he must take into consideration what? The receiver's opinion, knowledge, mindset, background, etc. to communicate effectively. Whenever a sender is communicating, उसको अपने mind में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? He has to take into consideration कि receiver के opinion क्या हो सकते हैं. जो सुनने receiver means the person who is going to receive the message, उसका knowledge कितना है, what is his mindset and what background he belong to. Last C is what? Courteous. The sender must consider feelings and viewpoints of the receiver while drafting the message. Next is we will see about writing skills. सी चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें राइटिंग स्किल्स हो गया, फ्रेजेस हो गया और सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑलरेडी इन योर इंग्लिश ग्रामर सो फार यू हैव स्टडीड, बट जस्ट आई एम रीडिंग आउट बिकॉज इट इज़ देयर इन योर चैप्टर. You please read the chapter and understand the things well.
So to communicate well, we must have a good command over the language in which we are communicating. At the same time, we must take care that there are no grammatical errors in the writing. To improve our writing skills, we will study about the basic components of English grammar and how they should be used effectively. Now, phrases. When we communicate with each other, we express our thoughts and ideas through words. Where जब भी हम communication करते हैं ना, so how we do our communication? We express our thoughts and ideas through some words. A group of words that make a complete sense is called a sentence. Now look at the following group of words. I'm not going to read all these following group of words. You will read this of your own, because this is nothing new and you are in class 9, you know all these things. Now see the sentences. Now I am reading the example. Girl in the brown hat. It is what? It is a phrase. The girl in the brown hat looked confused. ये क्या बन गया? ये एक sentence बन गया. The phrase in the above example makes complete sense when it is a part of the sense. मतलब phrase अगर आप sentence में use करोगे, then only it will become a complete sense. Now see the types of phrases. A noun phrase acts like a noun in a sentence. There are different kinds of phrases. See, a noun phrase जो होता है, for example, he was looking at the painting of a sailing boat. इसमें noun phrase क्या हो गया? Sailing boat. A verb phrase is what? It is a group of main verbs and helping verbs within a sentence. Example, she had been living in London. Verb phrase is what? Had been living. Had been living here is what? Verb. An adjective phrase is built around an adjective and consists of adjectives or articles. Example, he has led a very interesting life. ठीक है, अब यहाँ पे adjective क्या हो गया? Interesting is the adjective. Why? Because it describes the object. Adjective क्या होता है? जो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे. यहाँ पे वो जो एडजेक्टिव है वो कौन से ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है? लाइफ को. नेक्स्ट इज an adverbial phrase is built around an adverb by adding words before or after it. Example, the economy recovered very slowly. Adverbial phrase is what? Very slowly. Next is a prepositional phrase always begins with a preposition and is followed by a noun. Example, I long to live near the sea. Prepositional phrase is what? Near. और noun क्या हो गया? See. So, near the sea is what? Prepositional phrase. Now practice time. You will do it of your own. Next part comes over here is what? Sentence. A group of words that makes complete sense is called a sentence. A sentence must contain a subject and a predicate. ये सब तो class 5th से तुम लोग पढ़ रहे हो English grammar में. In class 4th also you have studied. Example, color blue. फेवरेट इज माई. अब इसमें कोई सेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है. इट मेक्स नो सेंस. देयरफॉर कैन यू से दैट दिस इज अ सेंटेंस? नो. अब इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? माई फेवरेट कलर इज व्हाट? ब्लू. Kinds of sentences. Now all of you know very well know what are the 4 kinds of sentences. Assertive or declarative sentence जिसको बोलते हैं हम statement. Then imperative sentence, that is a command. Then interrogative sentence means what? जहाँ पे question form होता है. और exclamatory sentence means जहाँ पे exclamation mark use हो रहा है. Now assertive sentence is a sentence that states a fact. Such a sentence is a simple statement that indicates, asserts or declares something. For example, Jane is a student. She lives in a big city. I saw my friend in the market. These are what? Assertive sentences. An imperative sentence is a sentence which gives a command, makes a request, or expresses a wish. This type of sentence may end with a full stop or an exclamation mark. Example, go to your room. तो यहाँ पे full stop हो गया because here you are giving your order. Please lend me your book. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? Request कर रहे हो because you are using the word what? Please. Have a good time at the picnic means you are wishing something good for others. Next is an exclamatory sentence is a sentence that expresses sudden and strong feelings such as surprise, wonder, pity, sympathy, happiness or gratitude. Example, what a shame, bravo, well done, क्योंकि यहाँ पे exclamatory mark use हो रहा है. An interrogative sentence is a sentence that is asking you a question. What is your name? Where do you live?
सी चिल्ड्रन, मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग प्राइमरी क्लासेस से पूरा पढ़े हो इंग्लिश ग्रामर। अब जो है प्रैक्टिस टाइम जो है, यू हैव टू डू इट ऑफ योर ओन। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट part of this chapter, that is parts of sentence. Every complete sentence contains two parts. सबको पता है subject और the predicate, आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो। subject क्या होता है? it is a group और it is a group of words, word या फिर group of words which conveys the names of persons or things about whom or which we are speaking. A predicate on the other hand is what? It is the part of a sentence which contains a verb and states something about the subject. Let us learn more about subject and predicate through the following sentences. The book fell off the table. इस sentence में the book क्या हो गया? Book is the book is the subject. क्यों? Because something is being said about it and fell off the table. Fell off the table क्या है? देखो, fell off the table आपका हो गया predicate. क्यों? Because that is being said about, जिसके बारे में बोल रहे हैं. The book is what? Subject and fell off the table is what? Predicate. The subject in a sentence usually comes first. Always you should know that subject क्या होता है? पहले आता है. But कुछ cases में क्या है? It is placed after the predicate for the sake of emphasis. For example, down went the ship. ठीक है. To determine a subject in a sentence, ask who. जब भी subject determine करना है तो आपको अपने मन में question क्या करना होगा? Who करना होगा. और the answer would be what? जो भी आपका answer आएगा वो subject हो जाएगा. On the contrary, ask what about the subject and the answer would be predicate. अगर आप क्वेश्चन में what करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? predicate. So in this sentence given above, अब ये जो sentence है ना, when you ask who, the answer is what? ship. Down went the ship. अब आप इसमें क्वेश्चन करोगे who went the ship, who went down, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? the ship. तो इसलिए यहाँ पे the ship क्या है? द शिप जो है वो आपका सब्जेक्ट है, जबकि मैंने बताया था सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, बट इन सम केसेस दैट इज व्हाई इट इज रिटन, इट इज प्लेस्ड इन सर्टन केसेस, इट इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रेडिकेट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. तो इस केस में द शिप क्या है? आपका सब्जेक्ट है. सो दिस इज द सब्जेक्ट व्हेन यू आस्क व्हाट. अब इसी में आप व्हाट क्वेश्चन पूछोगे, द आंसर क्या होगा? वेंट डाउन. तो वेंट डाउन आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. और द शिप क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. समझ में आया सबको? सो द आंसर इज वेंट डाउन. दिस इज द प्रेडिकेट. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मेंशन नहीं होता है, रादर इट इज इम्प्लीफाइड. लुक एट द गिवन सेंटेंस. नीचे वाला सेंटेंस देखो, सिट डाउन. ठीक है, इस सेंटेंस में द सब्जेक्ट यू इज इम्प्लाइड. यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होगा? यू इज इम्प्लाइड. You sit down ऐसा होना चाहिए. Now rules for writing a sentence. Use short sentences. Limit sentence content. Economize on words. Arrange the sentences in a proper sequence. Design sentences to emphasize the topic. ठीक है? Practice time. As I told earlier, everyone will do it of your own. Each word in the English language belongs to a particular class or a part of speech. There are 8 parts of speech in English grammar. ये parts of speech भी आपके पूरे English grammar का part है. I don't need to explain all these things. I want each one of you ये सब अपने आप पढ़ लो. Parts of the speech में nouns आ गया, pronouns आ गया, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, conjunctions and interjunctions. You please noun तो अब मैं सब पढ़ाऊंगी नहीं. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, I'm not going to teach all these things. I want every one of you to please read this of your own. ठीक है. और आर्टिकल, ये भी पूरा आर्टिकल जो है आपका ग्रामर का पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का है. आर्टिकल क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन. इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या आएगा? ए और एंड. तो आप लोग सब लोग ये पूरा चैप्टर अपने आप रीडिंग कर लेना. इसमें मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना है ही नहीं, क्योंकि ये सब पूरा आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है. ठीक है. डेफिनेट आर्टिकल भी पूरा पढ़ लेना. Example, please read it properly and understand. Then paragraph writing. Even paragraph writing you are studying in your English grammar part. Then rules for writing the paragraph. So study all this part and
अब इसमें क्या है, इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है वो भी आप लोग कंप्लीट करोगे. द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज डैश्ड एंड द ओरल कम्युनिकेशन. ये सारा रीड सॉल्व करके मुझे फोटो भेजना है आपको व्हाट्सएप पे कि टीचर आई हैव कंप्लीटेड MCQ, आई हैव कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड देन वी कम टू द एक्सरसाइज पार्ट. अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स क्या है. लिस्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट मेक रिटन कंटेंट इफेक्टिव. इसका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है. द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कंटेंट depends on the correct choice of words, their organization into a right sentence. Now what are the different kinds of phrases? Here also this answer is mentioned. ठीक है, इसमें तो सबके आंसर्स दिए हुए हैं, तो ये सब अपने कॉपी में लिख लेना या बुक से ही पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम. यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक ऑल्सो. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सी, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज. ये भी तुम लोग अपने से करोगे बिकॉज पूरा ग्रामर पार्ट आप लोग पढ़ोगे एंड आफ्टर रीडिंग यू विल गेट द आंसर्स वेरी क्लियरली. कुछ इसमें ऐसा नहीं कि आंसर मिलेगा नहीं. वॉट आर प्रेपोजिशंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. वॉट आर इंटरजेक्शंस, वॉट इज देयर इंपॉर्टेंस इन द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. और प्लीज़ एक जन लिख के मुझे फोटो खींच के मत भेजना कि मैम देखो मेरा करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि अब मैं मोबाइल में तो एक बच्चे का चेक नहीं कर सकती हूँ ना. तो प्लीज़ सारे आंसर्स बुक में हैं. आप लोग चैप्टर क्या करते हो, ठीक से पढ़ते नहीं हो और एक आंसर लिख के मेरे से क्वेश्चन करते हो कि मैम ये मेरा करेक्ट है कि नहीं. प्लीज़ चिल्ड्रन, डोंट डू इट इन दिस वे. यू ऑल आर नॉट इन क्लास 3 and 4. You all are in senior classes. और very easy this grammar is. Read the chapter and complete this exercise of your own. Are you getting it? This chapter is not at all difficult. Most important, please read this recap part. तो आपको सारे क्वेश्चन, सारा चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ब्रेन डेवलपर. अभी ब्रेन डेवलपर पार्ट जो है ना छोड़ देना. डोंट डू दिस. ब्रेन डेवलपर, लीव इट. यू डोंट डू दिस. डू ओनली दैट मच पार्ट वॉट आई हैव गिवन यू. ठीक है. सो नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 5, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. टिल देन प्लीज रीड द चैप्टर 4. चैप्टर 4 पूरा आपका इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बेस्ड है. सॉल्व इट प्रॉपरली, कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.